Hello student, how are you? Once again, Hemant is here to summarize the chapter from 8th class. The book's name is Honeydew. The lesson's name, The Best Christmas Present in the World. Lesson number 1 from Honeydew 8th class NCERT. I am going to summarize this lesson, go through this summary word by word. Before going to summarize this story, I would like to request rather use your earphone so that you will be able to understand word to word the summary. This lesson has been titled by Michael Morpurgrove. What a beautiful message has been given here. What I mean to say, nobody wants war. How the war can be ended and how friendly atmosphere can be created, this has been given in this story. So please go through. The best Christmas present in the world, 8th class, Honeydew. No one wants war to happen. Nobody likes war. Soldiers, yeah, soldiers too, they are human beings and do not want fights among the race. One should try to find out other sources and solutions to solve differences between the nation instead of war. This is a story about Jim McPherson, who was the officer of British Army. He wrote about his experiences he had with the German army on the Christmas morning to his wife. Now let us start the summary. The author had always wanted to buy a roll-top desk but could not purchase, and it was far too expensive. But one day what happened? He saw a roll-top desk in junk shop, which was not in a good condition, but made up of oak, was cheap. The author bought a desk. Same desk was bought by the author. When he opened the drawers, he found a small black tin box in it. On the top of it, there was a paper stuck with wrote, Jim's first letter received January 25, 1915. The author reopened the box and read the letter. It had Jim's experience on the Christmas morning with the German army. On the Christmas morning, Fritz waved a white flag and shouted, Happy Christmas, Tommy! First, the Britishers thought it was a trick, but then suddenly one of the German soldiers came up and started walking towards their trencher. He had a white flag in his hand, asking not to shoot, please. Then another soldier got up with a bottle of scalps and said it was a Christmas day and they would have sausage and bottle of snack and said it was a Christmas day. By that time, dozens of them came out with no arms. The soldier of British Army also raised their voices and came out. Jim, being the officer, could not stop them, also accompanied them. He met the officer of Fritz. Handsful, he introduced himself to Jim and wished him Happy Christmas. He told him, Jim, that he was from Dusseldorf and played cello in orchestra. Jim told him that he was from Dorset in west of the England and was a school teacher. Handsful said that he knew the Dorset very well as he had read the lot of England in school and from that book. He was fond of English books and his favorite writer was Thomas Hardy and his favorite book was Far from Madding Crowd. What was his favorite book? Far from Madding Crowd. They talked about their families, writers, and shared rum, whiskey, cakes, and smoked together. Hans thought, what Hans thought? He had tasted the best marzipan ever. Jim said there never was a Christmas party like that.
Then someone brought a football and greatcoats were dumped in the piles to make goalposts. Yeah, they get a football match between the Fritz and Thomas. Hans said this was how one should resolve the war. No one dies in the football match. No children are orphaned. No wives became widows. Jim said that he would prefer cricket as then the Thomas could be sure of winning. They laughed and watched the football match together. Fritz won goal, 2 goals to 1. The game was over, so were the sausages, rums, and snaps. The time came to bid goodbye to each other. Hans said that all the soldiers on both sides went to see their families soon, that the fight would end and they could all go back home. Both Jim and Hans saluted and walked away unwillingly towards their trenches. And the night in their Dagos, one could hear carol, Stille Nacht, Stille Night from Germans and British boys saying in chorus, White Shepherds watched. Chorus, White Shepherds was. They exchanged their carols and then fell silent. The author, on reading the letter, decided to go to Bridgeport the next morning to the address which was written on the letter. He asked a boy about the address and found burned out shell. The roof gaping, the windows boarded up. He knocked the neighbor's door and asked about the whereabouts of Mrs. Jackson. An old man told him that she is a lovely old lady, 101 years old. Her house caught fire. Totally, it was caught by fire due to candles, as she used candles rather than electricity because he always thought electricity to be very expensive. She was in nursing home, Burlington House on the Dorchester Road, on other side of town. The author reached the nursing home. He asked the matron about Mrs. Macpherson. The matron told the author that Macpherson had no family and one visit her, so she would be happy to see him. The author saw Macpherson sitting on wheelchair. He said hello to her, wish happy Christmas. Then he told her about the tin box he had found in roll-top box. Her eyes lit up with recognition. Her face glowed with happiness. She held the letter, suddenly reached out of look. And she took Arthur's hand, said to tearful eyes, as you told me you would come home by Christmas, and here you are. The best Christmas present in the world, one of the best Christmas presents in the world, nothing like that. I have become so much happy, my dear. Come closer, please. Come closer, Jim dear. Sit down here. She kissed her cheek and asked him to read the letter for her. She thought that her Jim had come back at her Christmas present. What a beautiful summary, what a beautiful lesson. So what I mean to say, student, the narrator has described in full length chapter, and here summary also you can come to understand the war is not a good thing, fighting is not a good thing, living in peaceful atmosphere, lovely manners, that is the good criteria of our life. That should be a good criteria of our life. So my dear students, summary of this story gets over here. Now I would like to summarize in Hindi. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको 8वीं क्लास की NCERT से दी गई किताब जो हनी ड्यू उसका नाम है, उसमें से पहला पार्ट जो कि नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड, ये मैं आपको समराइज़ करने जा रहा हूँ। और इसके राइटर हैं माइकल मॉर्फर्गो। आप एक एक शब्द गौर से सुनते जाइएगा, जिससे आपको परीक्षा में अव्वल आने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी।
और बेहतर होगा कि आप ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने मित्रों में न भूलें। आइए अब समरी चालू करते हैं। लेखक हमेशा से ही एक रोल टॉप वाली मेज खरीदना चाहता था। कौन सी? रोल अप टॉप वाली। स्पेशली वो बहुत महंगी होने के कारण नहीं ले पा रहा था, परंतु एक दिन उसने कबाड़ की दुकान से रोल अप मेज देख लो, जो हालांकि ज़्यादा अच्छी दशा में तो नहीं थी, परंतु देवदार का बना हुआ था। वो सस्ता सा था। लेखक ने वो मेज खरीद ली और उसने उसके दरवाजे खोली तो उसमें काला टिन का डिब्बा मिला। उसके ऊपर एक कागज़ चिपका हुआ था जिसके ऊपर लिखा था, जिनका आखिरी पत्र प्राप्त किया 25 जनवरी 1915 को। लेखक ने डिब्बा खोला, उसमें रखा पत्र पढ़ा। उसमें जिम ने क्रिसमस की सुबह जर्मनी की सेवा के साथ अपने अनुभव के बारे में अपनी पत्नी को लिखा था। उसने लिखा था, प्यारी कॉनी, क्या तुमको ये विश्वास होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो क्रिसमस की सुबह हुआ? फ्रिट्स क्रिसमस की सुबह हाथ में सफ़ेद झंडा लेकर चिल्लाते हुए हैप्पी क्रिसमस टॉमी कहते हुए आगे बढ़े। पहले तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक चाल है, हो एक चाल है, परंतु अचानक उनमें से एक उठकर उनके बंकरों की तरफ हाथ में सफ़ेद झंडा लेकर चलने लगा। फिर दूसरा हाथ में शराब लेकर आगे बढ़ा और कहने लगा कि क्रिसमस से हम सब मिलके खाना खाएंगे। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? दर्जनों सैनिक बिना किसी हथियार के, बिना किसी बंदूक के आगे बढ़ते गए। यहाँ पर अंग्रेजी सेना के सैनिक भी खुशी की तरफ चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। अंग्रेजी सेना का अफसर था जिम जो था अंग्रेजी सेना का अफसर, उन्हें रोक नहीं पाया, खुद भी उनके साथ हो लिया। जर्मन सेना अफसर हैंस से मिला। हैंस ने अपना परिचय दिया कि वह डसलफोर्ड में रहता है और ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है। जिम ने बताया कि डॉर्सेट में रहता है, स्कूल में अध्यापक है। हैंसफुल्फ ने कहा कि डॉर्सेट के बारे में उसे बहुत कुछ मालूम है, जैसे कि अपने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है और सुना है। उसे अंग्रेजी किताबों का शौक़ है। उसके पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी है और पसंदीदा किताब फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। उन दोनों ने बहुत सी बातें की, शराब, क्रिसमस, केक, सिगरेट साथ साथ बांटी। जिम ने कहा कि ऐसी क्रिसमस पार्टी उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। तब कोई फुटबॉल ले आया, सभी ने अपने कोट उतारकर गोल पोस्ट बना दिए, बड़े बड़े ढेर बना दिए दोनों साइड में और गोल पोस्ट बना दिए, और फुटबॉल का मैच फ्रिट्स और टॉमी के बीच में तय हो गया। हैंस ने कहा कि देखो, इस प्रकार के युद्धों का निपटारा करना चाहिए। देखो ना, फुटबॉल से कोई मरेगा क्या? नहीं, ये तो बढ़िया खेल है। यहाँ बच्चे अनाथ नहीं होते, औरतें विधवा नहीं होती। जिम ने मजाक में कहा, अरे फिर तो क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉमी आराम से जीत सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे फुटबॉल का मैच रखा था तो फुटबॉल का मैच खेला गया, जिसमें क्या हुआ मालूम है? जिसमें फ्रिट्स 1 के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। खेल समाप्त हुआ। बहुत ही दोस्ताना माहौल में मैच चला, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही प्रेम पूर्वक। साथ में इनके साथ उनकी शराब, सॉसेज और केक भी थी। अब पूरा मैच ख़त्म हो जाने के बाद शांति से, आनंद के साथ, मंगलमयी वेला के साथ अलविदा कहने का समय आ चुका था। हैंस ने कहा कि दोनों सेनाओं के सभी सैनिक चाहती है कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, अपने घर जाकर अपने परिवार से मिल सके। जिम्स और हैंस ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने बंकरों में चले गए। उस रात दोनों बंकरों में कैरल्स गाने की आवाज़ आती रही, फिर शांति सी छा गई। लेखक ने पत्र पढ़कर ठान लिया था कि अगली सुबह ब्रिटपोर्ट जाना है और लिखे हुए पते को ढूंढना है। फिर वहाँ पहुँचा। रास्ते पर लड़के ने उस पते के बारे में पूछा। वह घर अब एक जला हुआ खंडहर था। उसने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। उसमें बूढ़ा आदमी आया और उसने बताया कि मिसेस मैकफरसन 101 वर्ष की एक बहुत ही प्यारी सी बुढ़िया है। उसके इस घर में मोमबत्तियों से आग लग गई थी, परंतु वो बच गई। वह शहर के पास बर्लिंगटन हाउस के पास नर्सिंग होम में है। लेखक वहीं पहुंचता है। मैट्रन से उसके बारे में पूछता है। मैट्रन उसे बताती है कि मिसेस मैकफरसन का कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने ही नहीं आता उनसे।
अतः उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। लेखक मिसेस मैकफर्सन से मिलता है। वो व्हील चेयर पर बैठी होती है, उसके बाल सुनहरे से सफ़ेद हैं। वो उनको हेलो बोलकर क्रिसमस की बधाई देता है। फिर उन्हें वो टिन का डिब्बा दिखाता है जो उसे अपने रोलअप में से मिला था। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसका चेहरा खुशी से दमकने लगता है। वो पत्रों को पकड़ती है, फिर लेखक का हाथ पकड़कर अश्रुपूर्ण आंखों से उससे कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर वापस आओगे। ओह थैंक्स गॉड, तुम आ गए। यह मेरा क्रिसमस का इतना अच्छा तोहफा है, मैं कैसे न स्वीकार करूं। पास आओ जिम। जिम डियर, प्रिय जिम, तुम मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। फिर लेखक के गालों को अपने हाथ में लेके चूमती है। वो पत्र पढ़ने को कहती है। वो लेखक को जिम समझती है, जबकि क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा है। तो विद्यार्थियों, इस समरी से, पूरे पाठ से ही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए लेखक ने हमको कितना अच्छे ढंग से बताया है कि शांतिपूर्वक रहने से, प्रेम पूर्वक रहने से कोई समस्या नहीं पैदा होती और युद्ध किसी को भी पसंद नहीं है। आपको ये समरी मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि बिल्कुल समझ में आएगी। अच्छी तरह से पढ़िएगा और अच्छी तरह से आप इसको आत्मसात कर लीजिएगा, तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने में, एमसीक्यूज़ में, परीक्षा में देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अलविदा आपसे कहते हुए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, शांतिपूर्वक रहें, प्रेम पूर्वक रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।